to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.
pistol like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only. Hello guys. चलो भाई स्ट्रीम एलिमेंट वाला प्लगइन डाल लिया है. नाविया का बॉस मारेंगे नाविया. Hello bro. Solidify. Order guide. This one's got your name on it. Haha. This one's got your name on it. Let's light it up. Attack! Gather. This is order. Teamwork is dreamwork. Watch out! This No one's crit. got your name on it. Attack. वेट करते हैं बॉस का रिस्पॉन होने का. दो हैं यहाँ पर. हेलो सिमोस. केंशिन कॉन्सर्ट देख रहा ऑन स्ट्रीम. केंशिन कॉन्सर्ट होने वाला है. मेरे को ऐसा वो तो आया था इनका. क्या है रे केंशिन का. ये रहा ना. कितने बजे को? 4:30 बजे देख लेते हैं. कॉपीराइट मिलेगा? मेरे को इसका आइडिया नहीं है.
यार रिस्क नहीं लेते हैं फालतू, कॉपीराइट और मुंह पे फेंक के मारे साले, भरोसा नहीं। वैसे गेम के म्यूजिक अगर उसमें बजेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, अगर कोई ऐसा उन्होंने गाना बजा जिसमें कॉपीराइट होगा तो फिर लग जाएंगे भाई, कॉपीराइट लग जाएगा। चलो भाई, मैंने वेपन 90 कल कर लिया था नाविया का, थोड़ा रेजिन रिफ्रेश करना पड़ा बट हाँ हो गया। अब करेंगे इसको 90 आज होगी नहीं, मेरे को ये भी फार्म करना है, और ये अगर 3 मिल गया तो भाई अच्छा रहेगा। और संडे को और मंडे को दोनों का रेजिन मिलाकर वो कर लेंगे, क्या कहते हैं अपना नाविया के टैलेंट्स, और रेजिन रिफ्रेश करना पड़ा तो कर लेंगे। 899 कर देंगे, इतना मेरे पास शायद होगा इसके मटेरियल। नावा कंप्लीट हो जाएगी मेरी। कितना पीटी पर मिल गया वेपन? मेरे को कल ही तो मैंने वेपन निकाला है, नहीं परसों मैंने वेपन निकाला था, 42 की पीटी में मिल गया। सो मेरे पास नाविया का भी वेपन हो गया, नाविया भी हो गई, एंड स्कारमूश को फक मिस स्प्लिटर भी आ गया। अब मिस स्प्लिटर जाएगा ऑब्वियसली अयाका को, कचिंग वुल्फ फैंग ही यूज़ करेगी। अगर जब मैं कचिंग यूज़ करना होगा तब मैं मिस स्प्लिटर दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो बिल्ड है कचिंग का वुल्फ फैंग वाला है, मिस स्प्लिटर के लिए नहीं है। चलो ये वेपन मिल गया, तो कभी कोई ऐसा फीचर सोर्ड कैरेक्टर आएगा जिसको सोर्ड देनी पड़े तो मैं देख सकता हूँ। बस हाँ मिस स्प्लिटर की वजह से एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, वही ये मेरे 2000 रुपये सड़ रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों सड़ रहे हैं मेरे भाई। चलो भाई स्पॉन हो गया है। Solidify. Strike a pose. I'm going in. Watch out. थ्रेट कर दे नाविया। Feeling lucky. 1,22,000। लॉल पेट्स नहीं मार दिया भाई यार, इस पे 75 क्रिट रेट है तो भी क्रिट नहीं कर रही। रोहन में वेनेसडे को लेट्स गो। हाँ रोहन में वेनेसडे को आने वाली है। हराम खोर 2 दे रहे हैं, 3 दे दो यार, क्या चला जाएगा तुम्हारा। रोहन में मेरी 10 पेटी में निकल जाएगी। मेरे को फार्म करना पड़ेगा अच्छा सर, मैंने कुछ नहीं किया है अच्छा सर में, लिटरली मेरे को फार्म करना पड़ेगा और रोहन में निकालने के लिए 10 पेटी पे निकल जाएगी। 65 की पेटी है मेरी उधर पे एच एस आर में, एंड 50-50। चलो संडे को बैठ के फार्म करेंगे उसमें। यूला 2.0 कौन, रुआन में कि नाविया? देख भाई मेरे को लिटरली इस गेम को सबसे वर्स्ट कैरेक्टर मिल रही यूला ही है, तो किसी भी कैरेक्टर को यूला से कंपेयर करके मेरे को उस कैरेक्टर के लिए वो ख़राब नहीं करना। इसका ये वाला इस सिंगल फिजिक्स सबसे बेस्ट। अवल जाते चेस्ट खोल आते हैं। मेरे को एक्सप्लोर भी करना ना या क्योंकि क्रिट नहीं करते तो फिर रेडन बोल सकते हैं। रेडन भी क्रिट नहीं करती है। लॉल जोंगली के पिलर से ही मर गया वो।
मैं रेडन भी क्रिएट नहीं करती, मैं रेडन कह लूँगा बट यूला नहीं कहूँगा। कहाँ गई मेरी रेडन? अब मेरा इधर पे स्पाइन सड़ेगा वापस। अरे हाँ, मेरे को रेडन को ना वो बनाना था, फुल EMP बिल्ड करना है, उसके लिए मेरे को बेन देखना था मेरा क्या है। अरे R5 पड़ा है ना, बस इसको कर लेके 90। सीए पे मस्त शेड्स डालती है, स्केल या NA या बर्स्ट पे डाल दे शेड्स वाला एनिमेशन। नाविया कंप्लीट हो जाए, मिसप्लेटर लेवल अप कर लूँ, फिर मेरे को बेन लेवल अप करना है। मैंने नेवलेट का वेपन 90 कर दिया था ना? हाँ कर दिया था। चलो नेवलेट का वेपन में 90 हो चुका है, फ्यूचर में निकालेंगे तो कर लेंगे। ईवी वेवी व्हाट्स पॉपिंग? हेलो ब्रो। रिस्पॉन हुआ 20 सेकेंड। हेलो विजय। वैसे अभी स्टीम पे सेल आ रखी है और मेरे को जो गेम्स लेनी थी वो अभी सेल पे, बट मेरे को अभी पैसे नहीं क्योंकि मैंने वो खरीद ली क्रू है और मॉनिटर भी मंगा दिया, बड़े दिनों बाद मिले। हाँ मेरा कॉलेज चल रहा था, मेरी कॉलेज की टाइमिंग इतनी ज़्यादा बेकार थी, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अभी, जब स्ट्रीम्स दोबारा स्टार्ट करना चालू किया ना तब से। तो भाई कॉलेज की वजह से मैंने को मिल रहा था टाइम, और प्लस मेरा लैपटॉप भी हग्गू हो गया था पूरा, और अब तो पीसी पे बढ़िया स्ट्रीम चले। ओहो 2 लाख। हाँ तो मैं कहा था स्टीम पे, तो स्टीम पे आ रखी है अनबाउंड सस्ती, एल्डन रिंग भी सस्ती आ रखी है, और नियर ऑटोमेटा भी सस्ती आ रखी है। अब तीनों ही लेनी थी मेरे को, बट मेरे को रिसेंटली अभी थोड़ा दिन पहले ही मैंने क्रू मोटर फेस्ट खरीद ली 1000 रुपये लगा के, और अब मेरे को खल रहा है। मतलब खल ये रहा है कि साला ये स्टीम की सेल और जल्दी आ जाती तो मैं उनको पहले बाय कर लेता, क्रू को बाद में कर लेता। बट मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना स्टीम पे मस्त सेल तभी आती है, हमेशा का है। अनबाउंड ऑलमोस्ट 500 रुपये की आ रखी है, नियर ऑटोमेटिक भी 532 रुपये की है, एल्डन रिंग 2200 की हो गई। बट हाँ एल्डन रिंग तो शायद ना लेता क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी एल्डन रिंग के लिए। लाता तो कमीशन कर लिया जाए।
आज तो नया इवेंट भी है। वो भी करेंगे क्योंकि इस भाई जेम्स चाहिए हैं और मटेरियल चाहिए भाई, बुक्स चाहिए ना। इसमें इवेंट में बुक्स हैं नाविया की। ये तो नहीं, ये बुक्स हैं, ये मेन चाहिए। और ये साला मेरे को पता होता ना ये वेपन आने मटेरियल आने वाले, मैं वेपन के लिए फार्म भी नहीं करता इतना। मैंने नियर रिस्क ऑफ रेन 2, टाइटनफॉल 2 एंड बैटलफील्ड 5 ले ली भाई। सही है यार। यार इस टीम का सेल का मैं वेट कर रहा था कि कब आएगी, बट अभी रिसेंटली एक और छोटी सी सेल आई तो मेरे को लगा वही एक सेल आने वाली है। अब कोई सेल नहीं आई है तो मैंने उसमें से क्या बाय करा था उस सेल से, नहीं मैंने उस सेल से कुछ नहीं बताया। एपिक पे सेल आई है और साथ ही साथ तो मैंने एपिक से बाय कर लिया क्रू मोटर फेस्ट। और बस मेरे लग गए, मेरी किस्मत, जैसे मेरी किस्मत इतनी बढ़िया है। वो हैकर आया था जिसमें GTA 6 लीक किया था 18 साल का, नहीं मेरे को नहीं याद है। हाँ ये पता है कि GTA 6 का ट्रेलर लीक हो चुका था। क्यों क्या हुआ उसके साथ, हैकर के साथ? GTA वालों ने गिरफ्तार कर लिया है भाई। चलो चलो चलो, बहुत लीक कर रहा था हमारा गेम। नियर ऑटोमेटा खेलने का मेरे को भी मन था यार, उसमें 2B भी है अपनी, खेलने का मन था। और वो शेयर नहीं हो सकती है, राशु भाई के पास थी वो गेम, उन्होंने कहा था कि मेरे से ले ले, बट शेयर नहीं हो सकती तो मेरे को उनकी आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, फिर खेलनी पड़ेगी। वो झंझट मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अगले साल की भी ये लिंक पे सारे स्ट्रीम सेल मिल जाएंगे। लिंक पे सारे लिंक नहीं तुम डाल सकते अभिजीत, इसमें सिर्फ मॉड्स ही डाल सकते हैं लिंक। ये चीज ना मेरे को डीएम कर दे डिस्कॉर्ड पे, तब अच्छा रहेगा। एक हाइड्रो कैरेक्टर चाहिए ना। I'll take care of it. ये अनबाउंड शायद मैं ले लूंगा, एनएफएस अनबाउंड 500 रुपए के अंदर की है वो, मैं वो बाय कर लूँ क्योंकि भाई एनएफएस खेलना भाई। आओ गए सर, मिल गई है हमको लिंक कर दिया। हाँ ट्रेलर नहीं अल्फा फुटेज लीक की, अब उससे लाइफ टाइम हॉस्पिटल प्रिजन लगी है जब तक ये डजंट पोज हार्म। ओ भाई हाँ बस यार 11:30 टाइम दिया एग्जैक्ट उस पे स्टार्ट हुई। अच्छा हम ये मना रहे 4 तारीख तक सेल है पूरी, ठीक है 4 तारीख तक सेल है यार। उस समय कोई बढ़िया क्लाइंट वर्क आज अच्छा खासा महंगा, और उससे भाई सारी गेम्स खरीद लूँ एल्डन रिंग तक। अरे जोंगली अपने पिलर पे क्या चढ़ रहा है भाई। This one's got your name on it. अरे मैंने ई हक दिया, नाइस वन। यार ये साला अपनी जगह से हट गया। आवाज मार रहे अब तक यार। कॉर्ड अभी गंदा वाला खेल का मेरा थंब हल्का सा वो हो रहा है पेन। कॉल के लिए मूवमेंट बहुत देनी पड़ती है। वॉच पार्टी तो चालू हो गया क्या वो? यार पता है मैं इसलिए नहीं कर रहा कि साले कॉपीराइट नहीं देते फालतू से, देंगे नहीं।
मेरे को दिखा रहा है क्या गेम्स 0% सेल थी। ये फिर 2 दे रहा है आराम को। गाना बजा रही है अपने। छोड़ो कौन देखेगा, हटाओ। अब मेरे को नया जेजे का एपिसोड भी देखना, मैंने देखा नहीं अभी तक। Where'd that come from? कॉपीराइट अपील में लिख देना आई विल नॉट पुल फॉर जेन्युइन। लॉल। इस साइड पे गेम्स की हिस्टोरिक प्राइस एंड दूसरी कंट्री के पे क्या प्राइस है सब दिख जाएगा। ओके ओके, ये तो तुमने बहुत सही चीज बताई है। अब मैं सेल के एटलीस्ट पैसे सेव करके रखूंगा। ये जोंगली मीट बॉल से ना मर जाए। लो हेलो डी लॉर्ड। ओह शिट, पीछे रह गया। हेलो अनस। ये साला मैंने अभी तक किया नहीं है। बहुत बड़े, यही तो होता है। थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ ना कुछ हक देता हूँ इस पे। एक बार रेजन देखो कैसे डिप्लीट हुए हैं। Now what does damage? Of course bro, बहुत अच्छा खासा डैमेज नाविया का। भाई क्या लोगे भाई, ये कैरेक्टर इस वेपन पे कहाँ है? इस वेपन में 160 के हिट कर सकती है ई पर। मेरे को स्पाइरल हेल्प चाहिए, देखता भी मैं। इस वेपन पे 160 हिट कर रही है ये कैरेक्टर, ठीक है? तो भाई ऑब्वियसली कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अगर तुम पे वुल्फ ग्रेवस्टोन है या देहा का वेपन है ना, तो तुमको इसके सिग्नेचर निकालने की नीड नहीं है। और वैसे मैंने लिखा तो नहीं है स्पाइरल एबिस हेल्प तो नहीं लिखा है ना? तो अबिस तो करने का मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज इवेंट वगैरह भी निपटाना मेरे को। बोलते शांस भाई से बोलते वो कर देंगे।
क्या करना था मेरे को? थोड़ा रह रिफ्रेश करके निकाला जाए। तो कोई कैरेक्टर जल्दी से जल्दी बिल्ड चाहिए, रेजन रिफ्रेश करनी पड़े। उस बात पे एक यूआईडी चेक कर लूँगा, एक कैरेक्टर रिव्यू डाल दो यूआईडी भाई तुम। इसको बॉस को मार के तुम्हारी यूआईडी चेक करता हूँ। कैरेक्टर का नाम बता दो, क्या नावी दिखनी है? अभी नहीं है, नाविया नहीं है, तो जो कैरेक्टर दिखाना है ब्रो उसका नाम डाल दो, मैं देख लेगा भाई, 10 मिनट में हो जाएगा बस। यार मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी करने का, सही बताऊं अनस। अब भाई की जरा कोई कैरेक्टर देख ले रहे हैं, यूआईडी में यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, जरा एक सेकेंड। गामिंग की गेमिंग, ये भी बताओ ब्रो। शी इज लिटरली लिनी, हाँ लिनी जैसा ही उसका गेम प्ले है वैसे ही डैमेज है। इसमें से कौन सा कैरेक्टर देखना है? लिनी देखना है, होताओ देखना है, टेक्नारे, आयाका या आयाटो? या तो मैं एक काम करता हूँ सारे देख लेता हूँ, छोड़ो वैसे भी इतने लोग हैं नहीं दिखाने वाले, ठीक है। आयाका 2K अटैक विद 78 232 109 ER का में ब्रो, ठीक है। और हरान दिया है। आयाटो का क्या दिया तूने? हाँ ठीक है, चल जाएगा ये वेपन। 2 पीस है कोज एंड 2 पीस ब्लेजर्ड, 2 पीस अटैक पे बिल्ड किया है, 2 पीस पे। ओके ठीक है वैसे। सैंड्स C09810 ओके, स्किन के साथ। आयाटो आया, आया तो देख लेते हैं। आया तो है 62 292 122 138 ओके नाइस वेपन अलहिदम का। 4 पीस HOD में बिल्ड किया तुमने, ये भी अच्छा पीस है, ये भी अच्छा पीस है। 35 भाई कहाँ से लाते हो ऐसे पीसेस, साला मेरे को मिलते नहीं कभी। 30 क्रिट डैमेज तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा अभी तक, मतलब जब से गेम खेल रहा हूँ 3 साल से मैंने 30 क्रिट डैमेज अपने अकाउंट पे नहीं देखा। C069 इसको तुमने लेवल अप क्यों किया? ऑटो ऑटो इसके लिए वेस्ट है। लेकिन नहीं 60 50 266 170 अटैक कम है तुम्हारा। वेपन तुमने क्या दिया है? एक्को सुमलार का दिया है और तुम्हारा अटैक कम है ब्रो। यार डिसेंट सा है, EM का तो कोई DD भी नहीं इस कैरेक्टर को। M हंटर ये पीस चेंज हो सकता है बट इसमें ER है, क्रिट रेट भी 9 रोल हुआ है, ऐसा चेंज हो सकता है इसमें। ER और क्रिट डैमेज निकालो एंड सैंड्स भी चेंज हो सकता है, इतना अच्छा पीस नहीं है सैंड्स भी। गॉबलेट अच्छा है एंड इसमें क्रिट रेट नहीं, इसको भी चेंज करो क्योंकि इसमें तुम्हारे पास सिर्फ EM रोल हुआ है जो पूरा वेस्ट है। नीली पे नीली वेब तो करता नहीं है, ठीक है, तो सर्कुलेट चेंज करो। C0988 इसका स्किल एंड ऑल्ट तीनों 9 करो। अगर चार्ज अटैक 9 ना करते तो भी चलता है बट इसका मेजरली डैमेज E और ऑल्ट पे ज़्यादा है चार्ज अटैक से भी। होता हो 36 HP 152 यार 112 70 240 ओके। होमा ऑब्वियसली, क्रिम्सन विच नाइस पीस, ये भी अच्छा पीस है। HP सैंड्स, पायरो गॉबलेट, HP सैंड्स और पायरो गॉबलेट के साथ तुमने बहुत से HP मेंटेन कर लिखी है। और C0 ट्रिपल क्राउन नाइस। 20 चचा 64 230 अच्छा DPS 20 है। सिग्नेचर
एम्बलम और सिवियर फिट। इसको 4 पीस वीवी दो ब्रो, एम्बलम पिन नहीं, वीवी दो, वीवी इसको। पीसेस ठीक है बट इसको वीवी दो 4 पीस। ऑल्ट क्राउन कर रखी। तिगनारी 75 202 132। वेपन भाई तुमने सबके सिग्नेचर निकाल रखे हैं, नाइस। गिल्डेड दिया है, ओके बहुत अच्छा पीस है ये। साला मेरे को ऐसा अलेदम के लिए चाहिए था अपने। C1 एक काम कर सकते ब्रो, 75 ना इसको 60 क्रिएट कर लो, 60 से 65 क्रिएट कर लो और क्रिएट डैमेज अपना थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि C1 पे ऑलरेडी इसको 15 क्रिएट रेट मिलता ही है चार्ज अटैक पे। ट्रिपल क्राउन नाइस, ठीक है। C1 है ना, थोड़ा सा क्रिएट रेट डाउन कर लो अपना, 65 या 65-70 के बीच में क्रिएट करके क्रिएट डैमेज बढ़ा लो। EM सही है, ER भी सही है, रेशियो भी ठीक है, बट थोड़ा सा क्रिएट डैमेज बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा है, क्योंकि ऑलरेडी 15 क्रिएट रेट तुमको कॉन्स्टेलेशन पे मिलता ही मिलता है। वो सिर्फ चार्ज अटैक का क्रिएट रेट है, बट मेजरली चार्ज अटैक ही करता है तेरा तिगनारी, फिर ऑल्ट पे डैमेज है। मेरे तिगनारी पे तो इतना भी CR नहीं है। कहाँ है मेरा तिगनारी? अबे यार ये रहा ना, 59 CR लेके बैठा हूँ मैं, देखो वॉन्डर दूं। देखो लिनी को वॉन्डर जा सकता है ऐसे, और तिगनारी को भी वॉन्डर दे सकते हो। हाँ वॉन्डर दे दो, मेरा भी वॉन्डर पे ही बिल्ड है तिगनारी, वॉन्डर पे बिल्ड है। वॉन्डर पे ज़्यादा डैमेज मिलता है तुमको, 35% का यहाँ पे CA का बूस्ट मिल जाता है, जो टोटल डैमेज में ऐड होके ना तुम्हारा टोटल डैमेज बूस्ट हो जाता है वॉन्डर पे। गिल्डेड पे चला सकते हो, गिल्डेड बेकार नहीं, बट वो सेकंड बेस्ट में कंसिडर होता है गिल्डेड। तेरा फर्स्ट बेस्ट यही है आर्टिफैक्ट तिगनारी के लिए। और हाँ लिली के लिए वॉन्डर सेकंड बेस्ट है, फर्स्ट बेस्ट नहीं है, उसके लिए एम एंट्री फर्स्ट है। गान्यू हंटर्स पाथ, गान्यू को हंटर पाथ दे सकते हो अगर तुम मेल्ट गान्यू यूज कर रहे हो। मेल्ट गान्यू के लिए हंटर्स पाथ बहुत अच्छा है, बट अब के ज़माने पे गान्यू यूज कौन करता है? गान्यू फैंस को छोड़ के। लाशू भाई देख रहा हूँ, गाली देंगे मेरे को पीछे से। लिटरली इतनी जल्दी मर रहा है। ओ गई 30 पीस। अगर मेल्ट गानी यूज कर रहे हो तो हंटर्स पाथ बहुत अच्छा है, अगर तुमको फ्रीज गानी खेलनी तो एक्समिनार का अच्छा है। मेरी गानी उस पे बिल्ड है, इस पे हार्प पे। Bro, she is broken. She's नाविया ब्रोकन कंसिडर नहीं होगी, बट हाँ उसका डीपीएस बहुत अच्छा है। ब्रोकन इसलिए नहीं है क्योंकि जियो में आती है, ठीक है, और इसके लिए तुमको जोंगली चाहिए है या कोई जियो कैरेक्टर रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारे क्रिस्टलाइन शॉट जल्दी बने, क्योंकि क्रिस्टलाइन पे डैमेज देती है। सिर्फ लाइक यालान होताओ जैसा होताओ का डैमेज है ना, वैसा तुम इसको क्या सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नाविया का डैमेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट हाँ ब्रोकन कहते तो ब्रोकन कैटेगरी में नाविया नहीं आती है, क्योंकि ब्रोकन में तुम्हारा निवलेट है, अलहेदम है, वो सब ब्रोकन में ज़्यादा आते हैं। फुरीना भी ब्रोकन कंसिडर हो सकती है बिकॉज इसका बफ कैपेबिलिटीज़ और सब डीपीएस यलान से ज़्यादा हैं दोनों चीज़ों में। मतलब जो ये बफ करती है वो काजुआ से बेटर है, और जिसका सब डीपीएस है वो यलान से बेटर है।
मैं फुल जियो टीम बट नो जियो डीपीएस नो प्रीमोज। जियो टीम मतलब तुम E2 की टीम उड़ रहे हो शायद। मैंने नाविया इसलिए निकाली क्योंकि मेरे पास सिर्फ जियो एलिमेंट ऐसा था जिसमें कोई भी डीपीएस नहीं था, या मैंने कोई कैरेक्टर बिल्ड नहीं कर रखा था एक्सेप्ट जोंगली। जोंगली तो एक शील्ड कैरेक्टर है जिसको मैंने अपने जाओ के लिए समन किया, तो बिल्ड किया था, ठीक है। प्लस आर्कॉन है तो उसको समन करना तो मस्ट था, ठीक है। E2 मैंने समन नहीं किया क्योंकि मैंने फिर जब E2 का रीरन हुआ था तो मैंने वॉन्डर निकाल लिया था, बिकॉज आई एम एनिमो लवर कैरेक्टर, मेरे को एनिमो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा लाओ नाविया समन करेंगे, जियो भी है, वाइफू भी है, और डैमेज जिस तरीके से उसका था किट वगैरह चल रही थी, मेरे को लग रहा था कि डैमेज अच्छा होगा, एंड डैमेज अच्छा है। रसायक जोंगली एल्बिडो गोरो बट डीपीएस, जोंगली डीपीएस चल जाएगा, एल्बिडो सब डीपीएस चलता है, गोरो इज अ सपोर्ट कैरेक्टर। हाँ तुम इस टीम में किसको एल्बिडो को हटा सकते हो, नहीं जोंगली को हटा के फुरीना एंड नॉयल डाल दो, C6 नॉयल, तब देखो डैमेज इस टीम में कितना अच्छा है नॉयल का। नॉयल तेरी फुरीना और एल्बिडो गोरो बहुत अच्छी टीम को हमें खेल के देखना। C6 को होनी चाहिए, लेकिन नॉयल अगर तुम रेड ऑन यूज कर रहे हो नॉयल पे तो C6 के साथ एकदम फाड़ देती नॉयल। मेरी तो C4 है। Parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. भाई जो स्ट्रीम देख रहा है, जिसने लाइक नहीं करी स्ट्रीम को तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। नॉयल E2 ना ले लूं? वैसे तुमको एक बात बताऊं डिलॉट, नाविया के आने के बाद E2 लिटरली इतना ज़्यादा नीचे गिरा है कि वो लिटरली कोई सेंस नहीं बनाता उसको समन करने का। बट वही जगह नॉयल बहुत अच्छी चल जाती है फुरीना के साथ, है ना, क्योंकि फुरीना को चाहिए होती हील बफ करने के लिए, तो नॉयल के पास हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं और डैमेज देने की भी कैपेबिलिटी है, इसलिए E2 तुम्हारा डेडिकेटेड डिफेंस टीम पे चलता है, लेकिन तुम नॉयल को चला सकते हो बहुत आसानी से, समझ रहे हो। E2 की सामान वर्ड सामान एकदम बहुत नीचे डाउन हो चुकी है, एक तरीके से मैं बोलूं तो वेस्ट है उसको निकालना। Order guide. Gather. Everybody stand back. Hey there. ऐसे ध्यान रखना जो मेरी नाविया डैमेज दे रही है वो लेवल 5 के टैलेंट में दे रही है, और वो खुद 90 नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली अभी मेरे नाविया का डैमेज एकदम गूं आएगा। वैसे 2 लाख 1.5 लाख गूं डैमेज नहीं होता है। कितना रेजिन बचा मेरे पास? 0। अब एक 100 कर लेते यार, मेरे को नाविया जल्दी से जल्दी बिल्ड चाहिए यार अपने अकाउंट पे। रेजिन रिफ्रेश कर लेते, कोई जाएगा नहीं है, क्या है, क्लाउड रिटर्न निकालने के लिए बहुत समन मिल जाएंगे। अभी कितने मटेरियल्स हो गए? 18। अरे नाइस, रेजिन रिफ्रेश करते आज ही मेरी हो जाएगी नाविया 90। यस, सिग्नेचर कब निकाल लिया? कल मैं स्ट्रीम कर रहा था, कल निकल गया था, कल या परसों निकला है शायद से। वेट, लेट मी चेक। कल नहीं निकला है, परसों निकला है। परसों मैं स्ट्रीम कर रहा था ना, हाँ कल मैंने स्ट्रीम नहीं करी थी, परसों मैंने स्ट्रीम करी थी, तो ऑन स्ट्रीम ये वेपन निकला था। चलो लास्ट और उसके बाद भाई नाविया 90 हो जाएगी मेरी। अभी इसके ये वो फार्म कर लूँगा, वही ओपन वर्ल्ड मटेरियल।
फार्म करके 90 आज, फिर मैं कल का पूरा रेजिन सेव करके और परसों का रेजिन सेव करके पूरा उस पर निकल लगा दूंगा। अबे वो हुआ नहीं क्या? अच्छा हो तो क्या? ये खुलेगा कैसे? अच्छा ये रहा ना, फुरीना है भैया, उस पर दोनों है अलाइनमेंट। और कुछ गिरा है? नहीं, चलो सामने है चेस्ट, उसको भी ओपन कर लेते हैं। ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन भी मेरे को कंप्लीट करनी है अपनी। अरे यार ये पानी वाला है यार। टेंड्रू लल। ओह एक और चेस्ट। भाई जरा इन पे क्या रही हो? ये बारिश हो गई। अबे एक लास्ट वाला बचा है। लो फिर तुम इसमें भी करो रे। मेरे को चेस्ट पे खड़ा होना पड़ेगा शायद। हाँ भाई चलो बारिश करो। कर भाई बारिश। फिर गलत बारिश कर रहा है पागल। बोल गए। चलो भाई मार भी देते हैं। हो गया रिस्पॉन बॉस। यस लास्ट रन। शायद मेरे को 2 चाहिए। कितने चाहिए? कि अब 2 चाहिए यार। चलो 2 भी देंगे चलेगा। है रिस्पॉन नहीं हुआ। हेलो ये कैसा रिस्पॉन है भाई? रिस्पॉन दिखा रहा है बट हुआ नहीं। अब करते हैं टीपी। 3 देंगे देख लियो। हाँ वो होता ही है। 3 है अब देखना। 3 देंगे। हरामी है ना साले के। जब 3 की जरूरत होती है ना 3 से तुम्हारा 20 हो जाएगा तब तुमको 2 देंगे। उसके बाद 3। चलो भाई जल्दी 3 लाओ। ये देखो 3। अरे हमें पता है यार ये 3 देंगे। हराम इस साले। आओ जरा लेनी वाली टीम निकाला है।
फार्मिंग करने के लिए। रिस्पॉन हो गए होंगे ये। मेरे को चाहिए इन टोटल 30। इसको ले लेते हैं, कोई मिलेगा तो पे लें। क्या काम है? स्ट्रिंगरे की पावर। बस थोड़े से दो। इनको मारना भी है भाई, इनका मटेरियल चाहिए लेवल अप करने के लिए। टैलेंट्स ये भी भाई फालतू में फार्म करने देंगे, बेकार चीज दी है ना उन्हें फार्म करने के लिए। क्रैप को भी मार देते हैं। और एक गलत एबिलिटी पे ले लिया, हट भी। और नीचे कहाँ दिखा रहा भाई? और अन्य अच्छा नीचे है। यार डुबकी मारो और नीचे तक डाइव करो जल्दी। ये क्वेस्ट के बाद लिटरली ये बहुत आसान हो गया था मिलने। कितने चाहिए? और 4 और चाहिए ना। ये उड़ गए 2, ये रहे बाकी के।
15, अरे नहीं शिट गलती हो गई। अब सारे लेने लग रहा है। काश में एक्स्ट्रा वाला सीन हो। 2 मिस हो गए मेरे से। रेडर कर ले। इसमें है क्या? अरे इसमें एक्स्ट्रा वाला का सीन नहीं है। लुल नहीं है ना। एक्स्ट्रा यहाँ ऐसे ले सकते हैं हम, बट मेरे को फिर से पूरा वो सर्कल काटना पड़ेगा चक्कर, और चेस्ट पीछे मिलेगी। लुल क्या है ना, नीचे डाइव करने के लिए मैं कंट्रोल दबा दिया था। हो गया। चलो अब ये तो खुद ही लेके जाएगा, मेरे को स्टीयर करने की जरूरत नहीं। खत्म हो जाते थे। जल्दी चल भाई। प्रेशियस चेस्ट। Navia. Navia 90 हो गई। 75 to 90 2.3 के अटैक हो गया ना यहाँ पे। अब मेरे को करना है सिर्फ इसके टैलेंट्स। आज तो टैलेंट डोमेन नहीं है ना। मोरा भी खत्म हो रहा है मेरा। और जरा वो निपटा लिया जाए। क्या कहते हैं उनको, बाउंटीज और रिक्वेस्ट, वहां से मिल जाएंगे मोरा। वाह देखो जियो डैमेज से इम्यून था ये। चलो नहीं लेके जा रहे इसलिए। इवेंट से टैलेंट बुक उठा लिया क्या? अभी मैंने इवेंट स्टार्ट ही नहीं किया है। इवेंट स्टार्ट करेंगे अभी हम। इवेंट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी। कल मेरे पे टाइम नहीं था, मेरे को मार्केट जाना था, इसलिए मैंने कल ही तो इवेंट आया शायद ये। फिर मेरे को मन नहीं किया स्ट्रीम करने का। देखा कि स्पीड ज़्यादा हो रखी, मूवमेंट स्पीड। आई थिंक सो इसका पैसिव काम कर रहा देगा।
मोगरा का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा 30,000। ये देखो ये भी साला जियो से इम्यून है। Everybody stand back! Huh? Clouds high. The birds come. Step right up. Look alive! Ha! ये हाइड्रो से इम्यून है, चलो कोई बात नहीं, इसी से ही मार देंगे। चल भाई मर जा। Wind strike. Going in! As one with wind and cloud. Let's get this show on the road. चलो भाई अब कर लेते हैं रिक्वेस्ट जल्दी। लिटरली अभी हम लोग ये जस्ट यहीं पे कमीशन खत्म करके आए हैं। Teamwork is dreamwork! The wind knows it. Lock off! Into the wind. Cheer. A round of applause. लिटरली हवा में चल रहा था लिनी। And voila. ले लो सर संतरे।
रिक्वेस्ट बाउंटीज भी खत्म। यार मेरे को इस वीक का वीकली बॉस भी मारना है। ये थोड़ा चार्ज हो जाएगा तो मैं आज वीकली बॉस मार लूँगा। ये 27 है ना, 3 चार्ज हो जाएंगे उसके बाद एक वीकली बॉस मार लेंगे, क्योंकि मैंने इस वीक का यहाँ ये वाला वीकली बॉस नहीं मारा है, या मार लिया है। मार लिया है, चलो ठीक है। अब इवेंट कर लिया जाए बहुत तेजी में। नाविया लेते टीम में। Holy a fucking fight back. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How could you only be telling me this now? I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Xavier. Well, I'm afraid you have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Oh. Hey, isn't that Xavier? He's back in fun too now. Make him take it all back. Don't tell me you believe that. Oh, why, if it isn't the dear traveler. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontanalia Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids and eventually Review opened the Hydro LOL Cobra. area. The holiday is deeply connected to the founding Bro, of review तो कर Fontaine, देंगे as well as its character unique का, laws and trials. but no It's hi one hello of the है most सर। important चलो festivals सीन for this हटता है तो nation. UID डाल दे भाई, कर लेंगे। What's with that weird expression on your face? Like you're trying really hard to remember something. It's like I woke up from a nightmare. I was just trying to recall the exact description from the books in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. एक सेकेंड, By the way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the wind blew. शायद डेथ टू मी में गाना कॉपीराइट फ्री है। बंद करो Yes, गाना भाई। those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch अब भाई Knights, तुमने people क्या ही will डाला है imitate भाई। them by putting on special एक costumes, साथ डाल दे भाई, raising चल golden जाएगा। cups and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water. क्या क्या देना है? फुरीना, अयाका, Really doesn't surprise Paimon at all. The whole Cookie का thing बस। seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year, you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat."
Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Huh. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. अब सही अड़े दिया भाई Who इसने. would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori. देख लेते भाई तुम्हें कैरेक्टर्स ये सीन हटने दो. How to describe her? Well, she tends to Okay. be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become Thanks, bro, for the very subscribe. interested in Inazuma. लॉल कोबरा. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. भाई इस वाले क्वेस्ट में बहुत बातें हैं. हाँ मतलब ये चीज़ मतलब पूरी क्वेस्ट ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा. मेरे को एटलीस्ट वो तो मिले ऑप्शंस, ताकि सेटिंग्स तो जाके देख सकूं. बंद करो. ओके क्या क्या है. तिगनारी बिल्ड नहीं किया सर आपने. शनहा 90 नहीं है यार. कम है ब्रो शना का. रेडन शोगन शना में आरटी देखने में कोई है नहीं. मैं सबसेट से ईआर रोल नहीं चाहिए. ठीक है, नॉर्मल लेवल अप नहीं करना था, सिर्फ स्किल और ऑल्ट लेवल अप करनी होती शना की. तिगनारी लेवल अप बने ही नहीं है तो देख के फ़ायदा नहीं है. रिटर्न देख लेते हैं कितना है. 1960 अटैक. ये साला मेरा ही रिटर्न तो नहीं. 72 158 262. ब्रो ये क्या कैंसर है. एटलीस्ट 4 पीस दे दो उसको. तिगनारी मोर लाइक थोड़ा बिल्ड है. रेडन को तो भाई कंप्लीट कर ले. इसका भी यानी वेस्ट है. बाजू 38 के HP. नाइस. यार ख़त्म है ब्रो. यार दो इस कैरेक्टर की यार चाहिए. वेपन भी 90 नहीं है. सबस्टैट से यार निकालो ब्रदर. ये रेशियो देने की कोई नीड नहीं है इसको. स्किल और ऑल्ट लेवल अप करो भाई. कुकी भी भाई बिल्ड करो डेंडो टीम्स के लिए. फुरीना 57 276 116. यार कम है फुरीना का. सिग्नेचर R2
ब्रो उसको रिफाइन तो नहीं क्यों किया? मैं तो अभी मिला फरीना का लास्ट डे पे। HP गॉबलेट बहुत इंसेन है, HP साइंस भी बहुत अच्छा है, कॉन्स्टेलेशन C0 है ना, हाँ फिर ठीक है बिल्ड, मतलब गॉबलेट है। टैलेंट 277, अरे भाई इसके टैलेंट कर लो और NA लेवल अप मत करना। अयाका 2K अटैक 37 240 111 का है कुछ, इसको R5 करो अगर ये वेपन यूज़ करना है। ब्लिज़र्ड स्ट्रेयर 22 3 नाइस गॉबलेट, decent sands, nice bloom, pretty nice flower, card tame. This is the piece bro. आया का बेड अच्छी, बस को R5 करो। इसका पिटी बिल्ड करा था। देखो बाइजू अच्छा है तुम्हारे अकाउंट के लिए, बिकॉज तुम बाइजू और फुरीना इन दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा है, तुम यूज़ कर सकते हो। बाइजू तुम्हारे अकाउंट के लिए ख़राब नहीं है कैरेक्टर, बट इसको बिल्ड थोड़ा सा अच्छा करो बस। वेपन तुमने सही दिया है, वेपन 90 करो एंड इसको यार जितना ज़्यादा दे सको उतना दो, ठीक है। मिसप्लिटर का ट्राई कर रहा हूँ, अगर मिसप्लिटर नहीं मिला तो R5 कर दूंगा, हाँ तब ठीक है। अगर मिसप्लिटर के लिए ट्राई कर रहे हो तो मिसप्लिटर निकालो, नहीं मिलता तो R5 कर लेना, सिंपल। कुकी का सैंड्स देखो, कुकी का सैंड्स देखना है, ओके देख लेते सर। 14 एंड 21 प्रो, ये सैंड्स बचाओ एंड अपने किसी डेंड्रो कैरेक्टर को दो जिसको EM चाहिए हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा सैंड्स है, लिटरली बहुत अच्छा। कुकी को सब स्टैट्स से प्रो HP परसेंटेज निकाला जाता है एंड HP निकाला जाता है एंड सब स्टैट्स में EM भरा जाता है, ठीक है। ये सैंड्स उठा के तुम अपने तिगनारी को दे सकते हो, उस पर बहुत अच्छा रहेगा, ओके। या अगर तुम पे अलहेदम है उसको भी दे सकते हो, ठीक है। स्लेपर ने भी अपना अलहेदम बोला है, देख लेते हैं भाई का भी अलहेदम। भाई बहुत पुराने हैं, 80 से स्टार्ट है UID। ब्रो तुमने लॉक कर रखा है, कैसे देखेंगे? 1000 तुमने कर रखा है अचीवमेंट, बहुत साहब भाई फुल ग्राइंड वाला बंदा। अब ब्रो लॉक कर रखा है सर आपने, कैरेक्टर डिटेल्स हिडन है, साइड लाइफ लॉक टू द स्टाफ मेंबर। अब स्पेस बार स्पैम करने की बारी आ चुकी है। मेरे को स्नाइपर वाला इवेंट खेलना है। शूटिंग प्रैक्टिकल ऑप्टिकल लेंस, ओके कुछ मिला। ये आई थिंक सो क्वेस्ट है, या क्वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को इवेंट अनलॉक करना था। ये रहा वेपन अपना और इवेंट शॉप, जिससे मेरे को ये भाई ये दो चीज़ें सबसे पहले निकालनी है एंड ये दोनों भी। ओके चलो इवेंट करा जाए पहले। नावे के साथ उसका वेपन भी निकाल लिया टाइम। हाँ ब्रो मैंने उसका वेपन निकाल लिया, क्योंकि उसका वेपन इस गेम में सबसे कूलेस्ट क्लेम हो रहा है अभी तक। ओके हाँ सेंसी ठीक है। ये पड़ा हेडशॉट।
हेडशॉट। ओह शिट, मिस। कितना मूव करता है रे भाई तू। Observe the surrounding and aim for the force to shoot। हो गई, और बंदे का भाई। उसको देखो भाई। शिट। भाई मैं सही बता रहा, मिसप्लेटर की जगह कुछ और निकल गया तो मैं रो दूंगा यार। देखो, जो मिले उसमें खुश हो जाना, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। हाँ, अगर ऑफ वेरिएंट मिलता तो चलो ठीक है, रोने वाली बात है, दुख वाली बात है मतलब। अबैंडन ट्रेनिंग भाई, ट्रेनिंग नहीं भाई, ऐसे ऐसा इवेंट दो यार। गेंशिन कोई ना ब्रो, मिल जाएगा। मेरे को भी मिल गया है, तुम्हें भी मिल सकता है। जब मेरे को नहीं चाहिए था तो मिल गया, तो तुमको भी मिल जाएगा। क्या करने वाला था मैं? हाँ, फर्दर इवेंट। इवेंट से निकाले तेरे बॉक्स। पहले तो ये दे दो भाई तुम। टेम्पल में 2 नाविया के वेपन्स मिल जाए यार। वैसे होना मुश्किल है थोड़ा ब्रो। सच में ब्रो, किस्मत भाई खराब है भाई मेरी। अब कल ही होगा डायरेक्ट टैलेंट लेवल अप। इवेंट्स बताओ भाई। ओ, ये स्नाइपर वाला सबसे बेस्ट था, और इस वाले पे चलते भाई। फाइटिंग फूटिंग वाला तो यार। और ऊपर वाली चैट तो पढ़ ले मेरे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ये तो पढ़ लिया था। मेरे को 10 पुल में 2 फीना वेपन मिले थे। अच्छा, तो ऊपर तुमने उसको R2 बेकार में किया है, बोले R2 लायक। अगर तुम एक लो स्पेंडर हो या F2P हो तो तुमको 5 स्टार वेपन्स रिफाइन नहीं करने चाहिए। टैबलेट की बैटरी जाने वाली है, बस वेडनेसडे तक। और टैबलेट की नीड उतनी नहीं पड़ेगी। F2P है एंड रिफाइन मिल मैंने नहीं करा था। F2P हो पर तुमने रिफाइन नहीं किया था। अच्छा, ये भी सही भाई। थोड़े से डाउन कर देता हूँ ब्राइटनेस टैबलेट की, तो उतनी जल्दी नहीं कटेगी। हाँ, चार्ज पे लगा देते हैं, 1 सेकेंड।
साइड वाली केबल उससे बहुत स्लो चार्ज होता है, बट एटलीस्ट प्लग्ड इन रहेगा। शायद किसी दोस्त को जेलेस कर दिया था तो उसने रिफाइन कर दिया। लुल। सही भाई, लोगों को 10 पुल पे 2 नाविया के वेपन मिल रहे हैं, 2 फुरीना के वेपन मिल रहे हैं। सेलेक्ट सीन यार, ये बाद में करेंगे। ये वाला सीन वाला नहीं करना मेरे को, ये स्नाइपर वाला है। ये फोटो खींचने वाला है क्या? नहीं, मारने वाला है। इलेक्ट्रोमेज आईआईओ दिया है इन्होंने। ओके, मैं वेब टीम ले जाता हूँ भाई, वेब टीम ज़्यादा बेटर लगती है। आकांगी शांगलिंग मेरी, शांगलिंग पेनेट काजुहा एंड आयातो सब डिलीट। मेरे को लिटरली इनकी नीड भी नहीं है, ये जो इन्होंने दिया है इफेक्ट। ब्रो सबसे सैटिस्फाइंग टीम। Nature. Everybody stand back. Clouds high. The birds call. Out of the frying pan, into the fire. Be still. I'm going in. The wind knows it. Fallen leaves adorn my... You're toast! Boba, get the... The depth back. Cascade. Teamwork is dreamwork. Get out of here. ये बोए और भी हैं। हट पे यार, ये एक क्यों दे रहे हैं?
तकते मैं अपना ये 10 स्कोर किसी कैरेक्टर से बेट कर सकता हूँ। क्राउड कंट्रोल चाहिए इस पे भाई। हाउ अबाउट रेड एंड नेशनल, यलान प्लेनेट शांगलिंग राइडन। रेडन शायद क्रिट भी ना करे। Shine down. Game's up. Time's over. Gotcha. Inazuma shines eternal. नॉन क्रिट। Teamwork is dreamwork. Here comes the catch. Quiet now. Now you shall perish. There is no escape. Then everybody stand nice and spicy. Game's up. Time's over. Gotcha. Inazuma shines eternal. Quietly now. I'm going in. Out of the frying pan. Here comes the catch. Now you shall perish. को शांगलिंग चलानी थी भाई पहले। रोटेशन हक दी। Illusion shattered. Everybody stand back. You're toast. Gotcha. Game's up. Time's over. Torn to oblivion. Shine down. I'm going in. Nice and spicy. Eat this. Busted. Here comes the catch. Inazuma shines eternal. बीट क्या है? एल और रेडन तो बीट भी नहीं कर पाए। लुल। सबसे बेस्ट टीम जो आई वो मेरी वेप, क्योंकि उसमें सीसी नहीं था ना इस टीम में। आयाका का मिस्टर लेवल अप नहीं बना, आयाका से भी ट्राई कर सकता था मैं। फारूसान के आर्टिफैक्ट क्या है अभी? एक बार जाओ ट्राई करा जाए। फारू पेनी चांगली जाओ। This is order. Solidified. Everybody stand back. Evil conquering. Worthless. Kia. Worthless. Kia. Worthless. Kia. Order guide you. Truth repeats its course. I'm going in. Disappear. Kia. ओहो भाई क्या टीम। चाओ या Boring. Worthless. मेरे को लिटरली 80K देखा है। I will have order. Have fun with this gift. Lament. चलो सिल्वर। Kia. Worthless. Worthless. Useless. I'm going in. This is order. Gears of the storm. Stabilize.
भाई स्टार्टिंग में मज़ा आया था जब उससे हिले चल सा रहे थे भाई। भाई देखो कहाँ भाग रहा है। Order guide you. अच्छा उन्हें तो बल्कि रेडन से अच्छा किया। हाँ शाह बाबू। वेपन मिल चुका है हमको, बट हम इसका लिटरली कोई यूज़ नहीं है हमारे लिए। ये वेपन के वो हैं रिफाइनमेंट। ओके ये वाला भी कर लेते हैं चलो। अच्छा ये वो वाला है, ठीक है समझ गया क्या। प्रिपेयर मैप ये मिला है, येलो जोन। मेरा येलो जोन है ओके। इधर 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 इधर। ओ उधर नहीं जाना। अरे वाह अरे भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मेरे में से भेजने के लिए। अरे या तो मैंने भी भेज दिया उनके बिल्कुल। अरे इधर कहाँ जा रहा भाई। हेलो सही बकैती है भाई। उधर जा उधर उधर। इसको तो भेज देंगे हो गया। नाइन 75 स्कोर मिला हार्ट में। अच्छा ये कितनी, ये 5000 स्कोर करने हैं ये, ठीक है समझ गया। ये जितनी बार भी खेल सकते हैं 5000 तक स्कोर करने हैं। क्यूटी दे दो भाई यार, ये खल्ला है भाई।
अबे इतने के लिए रिमार्केबल हट बे। I'm loving this treasure hunt. यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, शायद से मैंने सॉल्व वॉल्व कर दिया होगा कुछ। पर 38 lakhs मोरा है अभी। 84 बुक्स बची हैं, 703 ये बची हैं। ओके, वेंटी मेरा एसेंड है ना? नहीं है, ये फार्म करना होगा। चलो ये फार्म करके एंड वेंटी को भी 90 कर देंगे बाद में। इसके लिए तो आर्टिफैक्ट पे मैंने छीन लिए थे, काजुआ को दे दिए। एक्शन ऑनलाइन है। नाउ व्हाट, अब क्या किया जाए? ये मेरी वर्ल्ड क्वेस्ट बची है लास्ट की ना। इवेंट ही निपटाया जाए, छोड़ो। फिल्म, गो टू क्वेस्ट। चोरी है। भाई ये कैसी हाई हील से बीच में गैप है। जियो विजन। Miss Chiori? Your talk with the investor sure went fast. Oh? And who are... Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Likewise. ये मेरे को ऐसे इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है भाई सोती नहीं है। I strove to create an outfit that matched her high social... So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go... Well, it's like this. चलो भाई पूरा बताओ तुम। I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering.
I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. आयाटो और अयाका और योइमिया. Really? Then where do you live? We Malazines live in Mercy Village. The only way to enter भाई is from कितनी underwater. क्यूट है भाई योइमिया. Oh, अरे you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Aval yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the Court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. भाई खुश हो गई अयाका. Wow, what a Maybe coincidence! Ayaka. Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already! My, what a coincidence! Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure they'll be... Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec! Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? हड़ा अभी नाविया को नहीं रखे हैं, अभी यूई में चलेगी ब्रो.
from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew, a lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's आया तो author. करा भाई तू straight Oh, main it's points पे आ Musketeers, पकड़ती मत पेल I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Me too! Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. बात नहीं हो रहा मेरा सारा मोरा योइमिया पे You are too kind, टेंशन न all लो of you. योइमिया I really don't know how to. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader?
The clapper loader is responsible for using the clapperboard to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapperboard? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that. All right, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Oh, she's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. ऐसे फिर हट जा. So, all that's left for us to find is a director and an assistant. लुमी ने वो इधर नहीं. Oh, me. I want to be the director's assistant. ये You must मी help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro-Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, Oh, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her form or identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... केक ले जाओ और चाय ले जाओ. A gift for someone who was once seen as the Hydro-Archon. I wonder what... I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontanalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with YOIMIYA. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. But will that really be enough? You're right. We need to further... Huh? You want something even sweeter than... Yes, we'll need a gift that's... Well, what could that be? अरे उसको डायबिटीज हो जाएगी फरीना को. Your words of praise. रेसिपी भी मिल गई. अब बनाओ बैठ के भाई. योइमिया
go ahead. No need to worry about us. Oh, I hope Verena will like the gifts we prepared. Oh, and if you still think we should get something else for her, just let me know. I should be able to make some fireworks. Obviously. चलो भाई थोड़ा सा बना लेते हैं फूड. Go to the foreigner's apartment. शायद फोरिना का अपार्टमेंट यहाँ से पड़ता है ना पास. Take it easy. We're here! This is where Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. Coming. Ugh, seriously, who's knocking before afternoon tea? Huh? Who are you? फोरिना का face. Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. पूरा फोरिना जैसा कि. Lol. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. ये देखो eyes. Is this Fontanalia mousse? It's one of my favorites. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Oh. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and she's the camera operator. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. All right, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Okay, we'll take function as well. Control strength. Coat of fountain.
हाँ वर्कशॉप हो तो क्या क्या ये सही है Oh, it appears that you have more skill than I thought. ए वाह वन गो में ब्रू Does that mean Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed to work with you so easily, hey, but didn't we Huh? you know how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's ready. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. I see. It all makes sense now. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier. If, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh,
Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Absolutely, no problem. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great direct. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's musketeer? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than that. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiari, how do you know the captain of the Special Patrol's musket? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. It'd be best to keep it that. She sounds professional enough. She is a captain, after all. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before. And he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. ओके, क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई, इसको ढंग से करने के लिए है क्वेश्चन.
कौन आ रहा है? All right, this is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around here. She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Shiori has been through to get where she is today. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this, and before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Shiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Xavier. Chevras. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did, he had the whole day to turn चियोरी और शिवरेश ने ऐसे बात कैसे लगा दो स्लीपर सेल्स बात कर रहे हैं. came up and blocked Chevras. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right. Yeah, I knew. I was just. Enough about that, though. What did you? Oh, you see, it's. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right.
I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that? Really? You're willing to help us with our humble... Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Then I'll take Xavier back. ये चिरस ने हेडफोन्स लगा रखे हैं किस टाइप के हेडफोन्स हैं भाई Walk straight anymore. I don't want to spend a... Yep, see you tomorrow. Take it easy. So what did you want to tell us, Chevra? Have you read The Two Musketeers? The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear but it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating... Yep, the baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevras? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely a murder involving firearms? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up. I don't want people to see muskets in a negative way, and also... You mean they might be connected? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me,
and I would be most grateful. What do you think, Traveler? Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. चलो भाई क्वेस्ट खत्म हो गई है. हाँ जी. ओह ये वाली क्वेस्ट डायरेक्ट कंटिन्यूएशन पे. चलो यार कल करेंगे अब, है ना बॉयज. मिलते हैं कल. ओके कल मिलते हैं अपना स्ट्रीम के साथ. सेम टाइमिंग सेम. बाय बाय माता नी. कल मिलते हैं. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel like